परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। सृष्टि का एक अपना ही नियम है। जब वो मेहरबान होती है तो हर इंसान को भर भर के देती है, और जब सृष्टि का प्रकोप होता है तो मानो प्रलय आ जाता है। और इस वक्त सृष्टि के इस प्रकोप को इंसान सिर्फ बेबसी से देख सकता है। विज्ञान ने तरक्की जरूर की है, लेकिन सृष्टि के नियमों के सामने इंसान का बस नहीं चला है। इसका ताज़ा उदाहरण है हाल ही में लेह में बादल फटने से हुई दुर्घटना। बादल फटने से हजारों लोगों के जीवन में भूचाल आया। करीब 90 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई। कम से कम 350 के ऊपर लोग मलबे में फंसे, जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना की वजह से लगभग 5 से 6 आजू बाजू के गांवों में भी बाढ़ का प्रकोप हुआ। पानी के बहाव की वजह से अनेक मकान और इमारतें ध्वस्त हो गई। राज्य सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स और सैन्य की मदद से आपदाग्रस्त लोगों को हर संभव मदद करने की कोशिश की गई। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ। लेह में बादल फटने से आई आपदा से जनमानस को काफी क्षति पहुंची। परम पावन दलाई लामा ने इस आपदा में जिन लोगों को क्षति पहुंची उनको सांत्वना दी। इस संकट की घड़ी में आयोजित प्रार्थना सभा में वे शामिल हुए। प्रार्थना सभा मकलोडगंज के सुंगल खांग मंदिर में आयोजित की गई थी। प्रार्थना एक माध्यम जिसकी वजह से आप अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं, जिसे आप मानते हैं। प्रार्थना से आप अपने मन में चल रहे विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना से अपने मन को शांति मिलती है, आत्मिक शांति प्रदान होती है। बौद्ध धर्म में प्रार्थना का काफी महत्व है। प्रार्थना से अपने आप में आंतरिक बदलाव लाना होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, प्रार्थना मन को शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना से आप अपने अंदर झांक सकते हैं। आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाता है और आप में सकारात्मक भाव पैदा होता है। आपने सुना है वैदिक ज्योतिष के बारे में, आपने सुना है पश्चिमी ज्योतिष के बारे में। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमयी इलाकों की ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। तिब्बत, नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों की बौद्ध संस्कृति ने अपना विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र जिसमें होता है 12 साल का एक चक्र। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह वृष, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, पक्षी, कुत्ता और सुअर 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध ज्योतिष शास्त्र की गणना काफी सटीक मानी जाती है। तो क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए बुद्धिस्ट एस्ट्रोलॉजर से। Namaskar Trishtile. My name is Kumka Tindu. I'm an astrologer from Tibet Medical and Institute. The following are daily prediction for the month of September. 21st September 2010, Tuesday, 13th lunar day, 8th lunar month.
The elemental combination is fire, water is that elemental combination which has energy to bring death. In contrary, negative activities such as killing, concocting poison, and curses will be forceful. Avoid new child birth celebrations and taking baby out of the home for the first time is not good. Especially this day is not good for people who belong to monkey and bird year. Thumthong is at east direction, so important roles should not be done while facing east direction. September 22, 2010, Wednesday, 14 lunar day, 8 lunar month. The elemental combination is earth, water, a very good elemental combination. This day brings happiness and youthfulness. Good day to enjoy parties, dressing up and playing games. Violent activities such as going to war or fighting are not good. Today is Sojong, a very favorable day to generate merits and purify negative deeds. DT start moving from 7 a.m. to 10 p.m. Therefore, avoid toxic therapies during this period. Okay, day to put prayer flags. Thumthong is at east direction, so important activities should not be done while facing east direction. September 23, 2010, Thursday, 15th lunar day and 8th lunar month. The elemental combination is fire, wind. Elemental combinations is good. These combinations, elemental combinations, will bring strength and auspiciousness. It's especially good day for people who belong to tiger and rabbit years. You can specifically carry out activities like religious ceremonies, praying to the deities, reading scriptures, and etc. This day is also favorable day to raise prayer flags. Parties, especially among friends, should be avoided. This day is good to perform Naga pujas. Thumthong or empty vase is at east direction, so important activities should not be done while facing east direction. Thanks for watching. See you tomorrow at same time in same channel. These scientists, not religious minded, they are not talking about next life or heaven. Simply how to build healthy body. So now these people see clearly demonstrated peace of mind is very good, very important factor for our health. So everybody
taking care about our health. So it is not sufficient just to build one just in hospitals, these things. Of course, very good. But more important, right from the beginning, if there is certain things which can prevent illness, it's worthwhile to do. Then obviously, our own experience, everybody born from our mother, everybody have the experience sucking mother's milk. My father, I was told, just only one son of his mother's already. So, boy, very much sort of boy and mother, very much sort of close. So everybody, you see, have the experience. You see, we survived, basically, because of mother's infinite affection, care, with mother's own milk. I think here in this room, apparently, everybody, you see, seems very okay. But if you go more deeply, then those individuals here who received maximum affection at the time of our young age, deep inside, much healthier, emotional level, much healthier, more self-confidence, much less fear. That those individuals, here may be professors or chancellor, including myself and Dalai Lama, at the time, young age, lacking mother's affection, or even without mother's milk, just the cow milk or some other milk. I think deep inside, less sort of self-confidence because of experience at that moment, you constant fear, loneliness. So that, because of the traces, remain whole life. So that's our common experience. Then obviously, I think every student, I think if you watch those students who always smile, always playful, and remain truthful, honest, these students much happier, no matter what their social background or wealthier family or not. Then those students, you see, who may be very rich, clothes and everything, this is sort of something very attractive, but see, less smile, always too much cautious, with suspicion. Such student, long run, I think much less sort of happy mood to have. And then family, those family who often, you see, suspicion between husband and wife or parent and children. No trust, no openness, always too much cautious, superficial, no peace in that family, no human warmth, where full trust, respect each other, full of loving kindness, much happier. So these are facts. Whether we believe in religion or not, these inner values are key factor for happy life, happy family, happy community. So now we
one way, we have to make every effort to bring inner peace. Inner peace much depend on concept of loving kindness or these things. These are 1,000 years, all major religious tradition, whether theistic religion or non-theistic religion, all talking about these things. So therefore, some my friend say, when I talk the secular ethics, about secular ethics, then some my friend believe ethics, any ethics, moral ethics must be based on religious faith. Now non-believers, there are plenty of non-believers. I think this country, comparatively, I think still people are more religious minded, isn't it? But there are a lot of people who pray God, but at the same time a lot of corruptions, a lot of injustice things doing. So these people essentially not very faithful. If they really faith towards God or Shivaji or Brahma, then your daily conduct must be honest, compassionate. But these cases, their faith, their practice only in the temple or only in the front of the Ganesh or front of Shiva Lingam, not outside. So the religious concept failed to bring your daily life. So essentially these people also, among Tibetans also, you see, Buddham Shanam Gacchami, I mean the Buddhists also and Tibetan also, you see, Buddham Shanam Gacchami, Dhammam Shanam Gacchami, Sangha Gacchami, in real life, doing all sorts of things. So essentially these people, I feel, belongs third category, not serious about religion, or some cases non-believer, essentially. So now we must develop third way to promote human values or moral ethics to these people. कल आप देखेंगे परम पावन दलाई लामा जी के जीवन क्या है इस व्याख्यान का अगला भाग।